बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Hello and warm welcome to all mates of the global world. My name is Atif Saleem, but I am from Faisalabad, Punjab, Pakistan. You all are watching my YouTube channel. Kindly subscribe my YouTube channel and press bell icon for latest upcoming videos. Are you with me? Today I will elaborate you about Ielts listening part 2. Let's start topic of the day through step-by-step procedure. Ielts listening part 2. We will be pursued multiple choice questions. So I am sharing different kind of techniques to resolve these kinds of questions in decent and sophisticated manner with recognition of excellence. Step number 1. You should be pursued two persons conversation, especially in the IELTS listening part 2, because you will be unable to resolve these kinds of questions without listen the one or two person views. So both persons views are very essential to resolve the question, especially multiple choice question of IELTS listening part 2. Step number 2. You should be listen carefully conversation between two persons, because you could not be able to write any kind of answer without listening conversation between two persons. So listen carefully before giving any kind of answer. Step number 3. For instance, I am willing to play football from Liverpool side, but I am trying my best to play from the Southampton side. So, will I be preferred to play from Southampton as well as Liverpool? It depends upon the offering system. It is necessary to pursue the contractual system. It is considered as massive, beautiful or bountiful conversation between two persons. So, the right answer is Southampton. Southampton means last word. Initially, he is showing willingness to play from Liverpool club. Liverpool club means famous football club. But they should be changed his mind management system and played from football from Southampton club. He is also trying to play from Southampton club. So you should be click option number 3. Option number C is the right answer. Are you understand each and everything? You should be pursued standard deviation system of systematic approach in decent and sophisticated manner with legacy of greatness. So that's why you all are able to resolve these kinds of questions. Generally, these kinds of questions are pursuing standard deviation system in decent and sophisticated manner. But we all are far away due to the insufficient education system. We all are pursuing inferior quality education system, especially in our country. So we all are facing confusion, especially in the resolution matter. You should be pursue the last one, ending term. Initially he will be discuss some kind of issue, so you could not be click any kind of answer between the any word, because you are unable to write down the answer instead of decent and sophisticated answer. So listen the careful views of another person and then click the right answer. It is essential tip. Step number 3. Thorough conversation will be given you clear views. Clear views about mean research activities, picnic trips, riding, Liverpool tour topics and multitasking activities. So listen each and everything in a live and kicking manner with legacy of superbness. You should be listen hustle and bustle free audio of foreign audio makers, because you will be gain alive and kicking terrific and tremendous views about exposure of UK, United Kingdom as well as United States of America with other countries. So it is a very massive task, especially for all of you. Gain hefty result. It is a very good, especially for your future endeavors. Number 4. You should be felt calm, cool and relaxed from any kind of reckless activities, because fresh mind is essential to attain the goal in significant and magnificent manner with gargantuan brotham of superbness. We all are down to earth to spread the enlightenment of tenderness,
especially in the global world. So be careful to choose any kind of answer. Just calm, cool, and relax. Your concentration is essential to resolve this portion. Hope you will enjoy my lesson. Thanks to all of you. Love you all. जी जनाब, आज के टॉपिक में हमने बात की है आइट्स लिसनिंग पार्ट 2 के बारे में। आइट्स लिसनिंग के जैसे ही हम सेक्शन 2 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमने क्या देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी मालूमात में इजाफ़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि पार्ट 1 में हमने जैसा कि इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात को फॉलो किया था, यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात को फॉलो नहीं करना। इसमें किसकी बात को फॉलो करना है? जिन दो लोगों के दरमियान गुफ्तो शनीद का सिलसिला कार जारी है, उनकी बात की पैरवी करनी है। एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, यानी दोनों के ख्यालात को मद्देनज़र रखना है और इनके ख्यालात को मद्देनज़र रखते हुए अपने दुरुस्त आंसर का इंतखाब करना है कि इसमें से कौन सा जवाब दुरुस्त है। मिसाल देता हूँ कि इसमें किस किस्म के टॉपिक आते हैं। इसमें रिसर्च के बारे में टॉपिक आता है, तो आपने देखना है रिसर्च के बारे में कीवर्ड क्या और किसने आंसर दिया है। अमूमन बात का ये होता है कि वो आंसर दे जाता है तो हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर ए या बी ठीक है, लेकिन एंड में क्या करता है, वो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर देता है। तो आंसर नंबर कौन सा ठीक होता है, सी या डी ठीक होता है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है और ये आपने करनी है ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ। पहले में तो कंसंट्रेशन आपने किया है, लेकिन पहले से ज़्यादा आपने दूसरे में ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है। जनरली इसमें जब ऑडियो प्ले होती है ना गोरे की, तो वो तेज़ हो जाती है, तो इसमें साथ साथ ही आपने चलना है और फॉलो करना है आपने। जिस तरह वो कभी कहता है कि जी मैं लिवरपूल की साइड से खेलूँगा, फिर वो कहता है कि मैं साउथहैम्पटन की साइड से खेलूँगा, तो एंड में वो किस चीज़ की ट्राई कर रहा है, वो साउथहैम्पटन से खेलने की ट्राई कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मेरा कोई अग्रीमेंट हो गया लिवरपूल के साथ। इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलना है और जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करनी। आम दिनों में आप प्रैक्टिस करें जो है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अपने मेज़बान आतिफ सलीम बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।